तो 2012 में आपको पता था कि ई कॉमर्स जो है या मार्केट जो है इतना ग्रो करने वाली है? उस टाइम पे द आइडिया वाज टू बी इंडिपेंडेंट, कुछ काम करके बस अपने पैसे कमा लूं, ट्रैवल कर लूं, गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाऊं. Why should they not get into e-commerce? In today's time, Yeah, today's time. if a person is cut out for it, if a person has that entrepreneurship knack and उसको मतलब brand build करना है, तो what is the other option? You have to enter the market and you'll have to play the Correct. game by how it's played now. अगर एक इंसान को वो प्रोडक्ट मिल जाए जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट है, you know what amount can he make with that product, or is the limit countless? What is the winning product? अगर एक ऐसा winning product सबको मिल जाए तो it's like a gold mine. According to you, what is a winning product? आज की डेट में if I tell you that okay, you want to start a business, what is a winning product? The product that sells out in a month. But what is that product? So welcome to another episode of Walk the Right Talk by Garv Madan guys, and आज हम आपके लिए एक ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जिसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 2012 से लेके 2026 तक का सफर तय करा है एंड हाउस ऑफ क्वर्क के को फाउंडर भी हैं वो, जो कि एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ब्रांड है. इस पॉडकास्ट से आपको डेफिनेटली काफी वैल्यू मिलेगी, तो प्लीज इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना, और अगर आपको पसंद आए देन लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर देके जाएगा. सो फर्स्टली मैं आपको थैंक करना चाहूंगा कि आप पॉडकास्ट पे आए हमारे. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द ऑडियंस. दिस इज सुमित विजानी, एंड ही हैज बिन an e-commerce master that would which I would suggest in 2 words. So what would you like to add to the intro? I would not definitely call myself a master. I feel that it's been a great journey, but I have also been learning alongside. I'm still learning. I would say that the market is ever changing, the trends are ever changing, the technology is ever changing. So I would definitely not call myself a master, but yes, I am somebody who is, you can say, has a fair amount of experience in the e-commerce industry now. And I would like just to say that I'm grateful that you invited me today. Whatever knowledge and whatever thing that I have gained in the past few years, and if I'm able to impart it to anybody who's watching, and if they learn anything from this, I'll be very happy about it. Okay, so let me start this back from 2012. So you told me that you started e-commerce in 2012. So let's take it in a reverse. How was e-commerce market different in 2012 than it's today? First, I'll just introduce the audience that what I do. I am Sumit Vijani. I am Garv's older brother, you can say. Yes. And I run a brand by the name of House of Quirk. House of Quirk is an e-commerce brand. It's a D2C brand. We sell lifestyle products, travel products. Just trying to make life simpler by our products, and making it more fun and more productive for people. That is what we do. And yes, to answer your question, that how the journey is changed from 2012 to 2016. Honestly यार बहुत चेंज हुआ है. 12 साल, कितने 14 साल हो गए approximately when we started. तो पहले तो I would say कि जब e-commerce 12-13 में किसी ने ज़्यादा सुना भी नहीं था, लोगों में ट्रस्ट नहीं था, ये नहीं पता था कि ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए नहीं करना चाहिए. प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था तब, कि कैश ऑन डिलीवरी पे ही लोग ऑर्डर करते थे. ट्रस्ट नहीं होता था क्योंकि लोगों का कि पता नहीं क्या प्रोडक्ट आएगा क्या नहीं आएगा. एंड ऑब्वियसली टेक में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं. There are so many things that have evolved in the past 13 years. Consumer behavior बहुत चेंज हो गया है. कंज्यूमर ही चेंज हो गया, टू बी ऑनेस्ट. पहले जो लोग ऑर्डर करते थे और अब जो लोग ऑर्डर करते हैं, बहुत डिफरेंस है सब चीज़ों में. एंड आई वुड से और क्या, मतलब पूरा इंडस्ट्री चेंज हो गई है. तो बहुत बड़ी जर्नी करी है 12 साल में. एंड वी सीन लिटरली, मतलब ई कॉमर्स जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था
to what it grown to now, and with the launch of bigger brands, launch of big giants like Amazon and now quick commerce, so there's been a drastic changes. सो 2012 में आपको पता था कि ई कॉमर्स जो है या मार्केट जो है वो इतना ग्रो करने वाली है? वाज दैट व्हाट वाज योर एंटरिंग पॉइंट, और वाज इट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू? Not at all यार. 2012 मतलब I was 23 years old. उस टाइम पे the idea was to be independent. The idea was not, कोई बिजनेस प्लान नहीं था, to be honest. कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना. It was we learned along the way. So when I entered in the market, it was just sole motive to make some money, कि अपने कुछ काम करके बस अपने पैसे कमा लूं, ट्रैवल कर लूं, गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाऊं. और ये बेसिक मतलब चीजें थी कि उस टाइम पे 23 years old जो लोग अभी सोचते हैं हमारी एज के, जो मतलब एक 22-23 साल के लड़के को क्या चाहिए होता है, बस यही चाहिए होता है कि थोड़ा बहुत घूम ले, फ्रेंड्स के साथ जाना है तो उसके लिए पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े, और गर्लफ्रेंड को अगर कहीं लेके जाना है तो थोड़े बस इतने पैसे हो, ऐसी जगह पे ले जाए जो इम्प्रेस कर दिया, जहाँ पे वो वाला पॉइंट आ जाता है. बस एक वही मोटिव था व्हेन आई स्टार्टेड, के बस एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंस हो जाए, पॉकेट मनी मिल जाए, मतलब पॉकेट मनी पेरेंट्स से ना मांगनी पड़े और बस खुद के थोड़े पैसे हो. दैट्स अबाउट. समझ गया. सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जैसे आपने सेल्फ इंडिपेंडेंस की भी बात करी, जैसे आपने ये भी बात करी कि कि अपनी पॉकेट के लिए हमें पैसे मिल जाए. सो एज अ 23-year-old at that time, I would frame it like that if an audience is watching who is 23 years old, why would they not get into e-commerce? Why should they not get into e-commerce in today's time? Today's time. See again, मतलब there's no right or wrong here. कुछ मैं किसी को वो नहीं करूंगा कि नहीं तुम e-commerce ज्वाइन करो या तुम अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचो. But now I feel कि if somebody wants to build a brand, क्या अगर किसी का विजन है that उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ शो करना है, अगेन पर्सन टू पर्सन. इफ अ पर्सन इज कट आउट फॉर इट, इफ अ पर्सन हैज दैट एंटरप्रेन्योरशिप नैक एंड उसको मतलब ब्रांड बिल्ड करना है, तो what is the other option? You have to enter the market and you'll have to play the game by how it's played now. So internet is the biggest medium for you. That is the only place where people are selling and making money. So do you think कि 2012-13 की जो मार्केट थी उससे मार्केट में अब घुसना बहुत आसान हो चुका है because of the apps like Shopify and the apps that are plugins that are coming in? And if yes, then can you name me some plugins or applications that a person can use and just start a business in a day? Definitely चीजें आसान हुई है. I also feel कि चीजें तब भी आसान थी, but तब लोगों के पास नॉलेज नहीं थी. तब YouTube इतना बड़ा नहीं था. मतलब I still remember a lot of my friends who wanted to start their business until even few years back, people would still ask me कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे Amazon पे listing करना है. So again those basic questions still comes. But nowadays I feel that सब कुछ there's plethora of knowledge available everywhere. तो तब के टाइम और अब के टाइम में ये बहुत फर्क है कि पहले नॉलेज लोगों के पास कम थी, मीडियम्स तब भी थे, बट कैसे करना है ये नहीं पता था. आज की डेट में सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है. एंड कमिंग टू एप्लीकेशंस, yes, you definitely said it right that Shopify and there are so many other platforms, WooCommerce and in lot of Indian marketplaces and places too where you can host your websites. So it's quite easy now. GoDaddy and all. हाँ, मतलब WordPress और सब चीजें you can make your website easily and उसके बाद कुछ नहीं करना. मीडियम्स अवेलेबल है और लगता भी बहुत आसान है कि बस ये किया, Shopify पे एक पेज बनाया, बट उसके आगे की emergent has also हाँ, of course AI has made it even easier now. You just have to go to ChatGPT and ChatGPT will lay out entire plan for you कि कैसे क्या step by step चीजें. तो definitely things have become easier, but start करना आसान है, but to sustain it, to build it, it's very difficult. So most of the audience today, they are treating it as a drop shipping business. How is e-commerce and drop shipping
different or is it similar? I mean, drop shipping is part of e-commerce. ऐसा Do कुछ you drop ship? we do, but core business is not drop shipping. But it's very very limited. We are more focused on building brand now, and like it's not that के कहीं से product बस लिया, customers source को करा source and- कर रहा है, तो it's very limited in not that, and that's not even in Indian market. We're doing that abroad, but very very limited. But drop shipping, I would say, was very relevant around 4 years back, 5 years back. It still is to some extent, but markets are changing, as we discussed earlier. आज की date में people want to invest in brands. People don't mind paying slightly extra, get product delivered sooner, and want to have an experience. ड्रॉप शिपिंग में थोड़ी वो चीजें लैक होती है, तो दैट्स माय पर्सनल बिलीफ, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई फील दैट ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल था वो धीरे धीरे अब बहुत कम होता जा रहा है. So basically, my point for asking you this question was that why basically started somewhere that I would build a drop shipping brand. You know my story. When I called you the first day and I was all enthusiastic about doing the drop shipping and everything. So basically, there is a false criteria that is falling into the market right now, where a lot of people are just trying to gain views over this theory called drop shipping, rather than differentiating brand. differentiating for the people, Yeah. and giving out the real knowledge that drop shipping doesn't even exist in that point of view. That if I'm in India, I'm sourcing something from India Mart, okay, white labeling it and then selling it out to the market, what would be my margins? Do you think I would have enough margins to sustain a business? See, that varies product to product, बहुत differ करता है. It's everybody's journey is different. किसी के लिए कुछ चीजें वर्क करी है, किसी के लिए नहीं करी है. Some products, yes, you can have a margin depending on which market you are selling the product. And मतलब drop shipping business, I would not say कि it's completely zero now. अभी भी लोग कर रहे हैं ये चीज, और अभी भी लोग सेल करते हैं. मेरे को I feel India as a market is so broad that you find customers everywhere. तो हर product के हर type के customers है. Margins definitely vary करेंगे than your own branding के अंदर भी. It doesn't come easy, right? If you're branding your product, the branding takes a lot of effort, the branding takes money, तो margins तो obviously उसमें भी deduct होते हैं. But smaller run, I would say, if you're in it for a smaller, shorter time, तो drop shipping business can be viable for you. But if you want to sustain in the industry, and if you want to build a brand, if you want to have a longer run in the market, Accountability in the market. yeah, longer run in the market where you want to be more present, तो उसके लिए ड्रॉप शिपिंग लॉन्गर रन टर्म में नहीं होगी. वर्क ठीक करता है. है. सो नेक्स्ट अगेन मैं एक 20 साल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता हूँ. 20 साल 22 साल के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं हम. अगर कोई 20-22 साल का या कोई टीनेजर जो कि अभी स्कूल में ही है, वो अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, व्हाट वुड बी दोज 5 थिंग्स इन ई-कॉमर्स और 5 सेक्शंस इन योर बिजनेस और डिपार्टमेंट्स इन योर बिजनेस, 5 डिपार्टमेंट्स इन अ बिजनेस that a person should know that are involved in an e-commerce business? See, आज की Could be डेट में to be honest, any teenager also is very very smart. You go on ChatGPT, you go on AI, any AI, आपको वो full proof plan मिल जाएगा. How to start, what to start, क्या मतलब. Even I on regular days follow AI and I brainstorm that कि what is relevant for me. So you get entire step by step process. What do you want to do, how you want to do. But basic things I would say, to have the right product market fit, जो कि I feel is very very important, especially if you're in Indian market. So the product should be right market fit. Other than that, be very strong with your finances. I learned it the hard way after doing a lot of mistakes. But you need to be very very strong with your finances, your taxes, everything. So that is something that people usually ignore. They always try to find the right product, find the right marketing team, but financial जो main core होता है business का, उसमें लोग lack करते हैं. तो I would definitely say that कि एक strong financial team, accounting team is very important.
Other than that, yes, to have the social media, I feel is a very, very big in any business nowadays. It's the biggest impact that brings to the business. So the right social media presence, what you are doing every day with your social media is very, very important, I feel. ओके सो अब हम जैसे फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, फाइनेंसेस के ऊपर जब हम आते हैं तो फाइनेंस के अंदर मेरे को जो चीज सबसे पहले समझ में आती है, अभी हमने ड्रॉप शिपिंग और उसके बारे में बात करी कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स कैसे डिफरेंशिएटेड है. अब मुझे एक राइट प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसकी वॉल्यूम में सोर्सिंग करूंगा. सो इफ आई एम सोर्सिंग अ प्रोडक्ट इन अ वॉल्यूम, हाउ डज दैट कीप मी इन अ प्रेशर टू सेल दैट, या फिर इफ इट इज नॉट सोल्ड, हाउ विल आई रिकवर माई मनी फ्रॉम दैट? See, I would not recommend it to anybody that volume में source करो. Again, it depends on your vision that what you want to do. Also depend on the product that what you're selling. तो जरूरी नहीं है कि एक product आपको volume में ही source करना है. If you want to start small, you can start small. You can see how the product is selling, how the product is responding to the market. I would not recommend it to anybody to कि launch करने से पहले ही invest a lot of money in inventory. That Okay. is definitely something which can be not viable for your business in the future. And then can also turn around the Yes. reverse way, Yes. maybe. Yes. So let's go back to sourcing. Okay, sourcing से जब हम बात करते हैं, जब आपने स्टार्ट करा तब उस टाइम पे तो बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल होते होंगे कि मतलब कहाँ से सोर्स करना है. एंड डिड यू चूज टू सोर्स ग्लोबली फर्स्ट और वर यू सोर्सिंग इन इंडिया फर्स्ट? यार ऑनेस्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को क्या सोर्स करना है. ओके, it's a very you had funny an open story. mind. तो मतलब I just had a bit of a hunger and in terms that कि yeah, I want to build something, but I did not know. See, because I don't come from a business background. Yes, I have learnt on the go. My family and of course my older cousins and like your dad. I've just learned whatever I could, grasp whatever knowledge I could from them. But मेरा कोई ऐसा बहुत solid MBA या business background नहीं था. तो but I had a bit of hunger कि कुछ build करना है. तो when I started, a few of my friends were really kind. They helped me out that कि क्या मार्केट में ट्रेंडिंग है उस टाइम पे और क्या है. एंड वी जस्ट न्यू दैट कि सब कुछ चाइना में मिलता है. एवरीथिंग वाज वेरी फैंसी कि बस हाँ चाइना में सब मिल जाएगा. तो मतलब it'll be easier to source and Source from easier to China. find products there. तो me and my partner that time, like we जो भी savings थी हमारी, जो भी family ने help किया, whatever we could manage, we funded our trip. We went, and of course that time I felt like a child in a toy store when I reached there. Also like sea of things, like you're in a sea, right? You see इतने animals. It was like that कि कुछ नहीं पता क्या करना है क्या जाए. You get overwhelmed. So that was my first reaction when I reached there, the markets of course. And yeah, then it was a journey like step by step. Initially when we started, the idea was to do something really quirky which is not available in India and to launch something like, but then we later realized that those sort of products have a very niche audience. And from there, like again, every product, every trip to China made us learn something. Okay. So that time when we started selling our products, some products sold, some products didn't sell at all. तो वो उससे पता चला, learning मिली कि क्या Indian audience में बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है. But yeah, so globally I would say, I would not even say global, I would just mention China कि China से ही हम लोगों ने start किया था source करना. And when we started तब brand building का कुछ वो नहीं था. ठीक है, concept भी नहीं पता था कि ब्रांड बना सकते हैं, ये कर सकते हैं. The idea was कि ये अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये इतने का है, इतने का बेचना है, इतना मार्जिन मिलेगा, and that's about it. And that was the game. But it was much later in life when we started selling and we actually realized that okay, this is not a side hustle anymore.
have actually made something out of it. So then we realized that okay, it's time to invest in a brand, to have a proper team, and that is And how then the journey move to a started. bigger warehouse and everything. Yeah, I mean that came a long way. Like of course, when you start selling, you need bigger inventories, you need bigger space, you want to have manage a team. So for that also you need bigger office. So that has been Another part of the thing. journey. Yeah. सो राइट प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। राइट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर एक इंसान को वो प्रोडक्ट मिल जाए जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट है, देन ऑन अपवर्ड्स ऑफ व्हाट अमाउंट कैन ही मेक विद दैट प्रोडक्ट, और इज द लिमिट काउंटलेस? Yeah, it's a very hypothetical thing to say winning product. What is a winning product? विनिंग प्रोडक्ट माइट बी क्या मतलब आज मतलब यू अगर एक ऐसा विनिंग प्रोडक्ट सबको मिल जाए तो इट्स लाइक अ गोल्ड माइन, राइट? कि विनिंग Yeah. प्रोडक्ट मिल गया। यस, But according to you, what is a winning product? आज की डेट में if I tell you that okay, you want to start a business, what is a winning product for you? द प्रोडक्ट दैट सेल्स आउट इन अ मंथ, But what is that product? that is Could be what we need to anything. figure out. Yeah, Could be anything, right? Exactly. So there's nothing I would say कि winning products आते जाते रहते हैं। Products का कुछ वो नहीं है that कि एक product ले लिया तुमने and then you fall in love with that product and you build your entire business about it. You even take Apple's example. Apple ने पहले कंप्यूटर बनाया, फिर iPhone बनाया, but वो upgrade करता गया, right? If you take any big example, तो Products मतलब change करता products गया। keep on changing. तो अब ऑब्वियसली यू नॉट बिल्डिंग अ फोन, तो वो एक ऐसा कोई प्रोडक्ट मिलना कि तुम जो तुम्हारा बिजनेस बिल्ड करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट व्हाट आई वुड से इज दैट learn about consumer behaviors because market is always changing. So learn about customer patterns कि क्या customer को अच्छा लग रहा है आज की डेट में, क्या इंडस्ट्री में बूम है, and that's how you make your money. रिपीटेबिलिटी किस पे आ रही है? Yeah, and trends keep on changing. Like but customer patterns जो है वो एक specific time के लिए same रहते हैं, at least for certain years. So invest on that, I would say. So there's no winning product, but just the right systems that you build. सो ई कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं अभी की 5 कुछ ऐसी niches की which are performing good, what would they be? Again, niche for me is, niche keep on changing. Customers का pattern change होता रहता है। आज की डेट में जैसे people are going crazy about protein, तो वो protein का वो आया हुआ है, like, everybody wants to have protein and a lot of brands are building around it. So, ऐसे niche को, like, to emphasize it and to find that niche is very difficult. As I said, follow the customer patterns, follow customer behavior, and then you find your niche. Find your niche. But Correct. again, if I just have to name 4-5 broad categories in which there's a boom, I would say health and wellness, definitely. I would also say AI. AI as a category is a lot of new tools are coming in every day. I would say pet care is a very booming category in India. Baby products, Toys and everything. yeah, I mean baby as a category, I think people are investing a lot of money in people don't care about spending for their babies, so baby products as a category is a very big category. And I would also say food industry, like restaurants nowadays, coffee and restaurant business is booming. That's my perception. I could be wrong, but yeah, that's what I feel. So अब हम थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं that when you were listing first time on Amazon, so if somebody of our age wants to list his product for the first time on Amazon, what is the first step he would take? Yeah, first step is to make a company. And first सबसे पहली चीज तो यही है, you have to list your business, you have to have a registered company, then you can just go on Amazon. There's a button called how to become a seller. You click on that, Amazon give you step by step Guide for details how to be a seller on Amazon. And that's about it. You just start listing your product, and honestly, again, I would say that AI has completely changed the market. Now Amazon has their inbuilt AI. Before listing the product, Amazon will tell you that what you should mention about the product. When I was starting on Amazon, we actually had to find the features of the product on our own, literally, like, create everything, and then probably ask our factories, ask our suppliers that okay, what can be the further attributes about it. We had to hire a content writer to mention each and every detail about the product. But nowadays everything is readily available on AI. You just have to click a picture, post it, and boom, you have your results.
So yeah, just register your company and then go on Amazon. Okay. And become a seller. सो हम चाइना की जैसे बात कर रहे थे, तो क्या चाइना से सोर्सिंग करने में we get higher margins on certain amount of products? You know, is there a difference from sourcing from India? Yeah, see, Indian market and Chinese market are very very different. Again, India is, I would say, उनका अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड हो रही है. China has been there in the industry. China has built an entire ecosystem which no other country has been able to replicate now. Correct. But again, after China, I feel if there's any opportunity elsewhere, it's India. India itself. And correct. Market is growing here, but still a long way to go, I feel. So I'll talk about MOUs a bit, like MOQs. Sorry, I'm saying MOUs. MOQs, minimum order quantities. Okay. So basically minimum order quantities जो चाइना में कुछ प्रोडक्ट्स की हमें मिल जाती हैं टू स्टार्ट लोअर, क्या ये सच बात है कि इंडिया में अगर हम सोर्स करने जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट के लिए हमें हायर MOQs उठाने पड़ते हैं? Not really. मतलब सी चाइना में भी MOQ रहता है, like depending where you sourcing from. Like चाइना में there are also a lot of middle person available जो आपको higher price point पे चीजें मिल जाती है. But rather in my experience, I have also sourced a lot of limited quantities in India as well. तो Okay. ऐसा नहीं है कि इंडिया में MOQ का प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन इन द इंडस्ट्री. अगेन इफ यू लाइक गोइंग टू एन इंडस्ट्री एंड आस्किंग फॉर स्मॉलर क्वांटिटी, तो वो कोई भी इंडस्ट्री वाला नहीं देगा नहीं आपको. देगा. दैट्स द सेम Correct सिनेरियो इन चाइना आल्सो. इफ यू आर गोइंग टू जैसे तुम चैनल फॉलो करते हो, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, देयर इज अ होलसेलर, तो वहां पे भी वही है. और यहाँ इंडिया में भी वही है. अगर आप होलसेलर के पास जाते हो तो आपको फिर भी थोड़ी कम क्वांटिटी मिल जाती है, एंड स्टिल लीव्स यू एन लाइक small amount of margin to play with. But again, if you want to source the product at a cheaper price, then you go to a manufacturer, and then with any manufacturer in the world, I would say that they will not give you a smaller quantity. Okay. Because their overheads are a lot. So you have to see that where are you buying from. ओके. सो अगर हम सोर्सिंग जैसे चाइना से कर लेते हैं, मैं 20 साल का लड़का हूं, मैंने चाइना से कोई प्रोडक्ट सोर्स कर लिया है, क्या मेरे मार्जिन शिपिंग पे और उन सब चीजों पे कट डाउन हो जाएंगे, या मतलब दे आर गोना बी इक्विवेलेंट टू व्हाट आई सोर्स फ्रॉम हियर और समथिंग लाइक दैट? See, honestly speaking, when you source globally anything, things are very uncertain. Especially, we have seen the global scenario at the moment. The wars are happening, fuel prices are increasing. तो external factors हमेशा रहते हैं जिसकी वजह से prices up and down होते रहते हैं. And again, depending on which product that you're sourcing, if I would say if you're able to find the right manufacturer here in India, there's nothing like it. And you can iterate it as per you. But when it comes to China, yes, there are a lot of factors involved. You have to pay product price, you have to pay shipping price, you have to pay custom duty, and then there are all more costs involved. You have to pay loading charges, and I would not get into all of those details, but yes, there are a lot of costs that are involved. Any product that you source from China, say for about 100 rupees, and especially with the currency rising now, conversion rate इतना बढ़ गया है in Indian और Chinese currency का, that वो पहली 100 रुपीज का प्रोडक्ट 150 रुपीज का हो गया बिकॉज ऑफ द करेंसी. एंड उसके बाद आपके ओवरहेड्स लगा के वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट आपको कहीं ना कहीं जाके, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, वो आपको 225 या 250 रुपीज का पड़ता है. ओके. So there are a lot of other costs that comes into picture. Okay. And if you are able to find something in that similar price point in India, I would say 250 rupees, then it's a better deal for you because uncertainty कम है. उसके अंदर करेंसी का बढ़ना और शिपिंग का बढ़ना वो आपके प्राइसेस को हिंडर कम ज्यादा नहीं करेगा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एनीथिंग यू आर सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, इट्स वेरी अनसर्टन. कभी भी वेरी pricing- अनसर्टन. Yeah, uncertain in terms of pricing. Like I'm not saying in terms of anything else, but कभी भी बढ़ सकता है, घट हाँ, सकता है, मतलब वो वाला करेंसी चीज का है. प्राइस बढ़ गया, शिपिंग का प्राइस बढ़ गया, तो एट द एंड ऑफ द डे दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्ट. अच्छा, अनसर्टेनिटी की हमने बात करी है, तो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी वेंडर ने धोखा दे दिया हो चाइना में, या हाँ. कोई मतलब, फिर अगर ऐसा हुआ, चलो हाँ, आप यू विल एलैबोरेट ऑन द स्टोरी, देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन. या मतलब सी, आई फील दैट उस टाइप के लोग जो चीट करना चाहते हैं, हु हैव टू मेक इजी मनी, वो हर जगह प्रेजेंट है.
तो हुआ है, we had placed an order to a factory that was back in 2016, I would say, and it was a big order. That time that order was over 22-25 lakhs का order था, and पूरी factory visit करी और सब कुछ किया, but everything was fake. Yeah. Even the factory was fake. Yeah, I mean, see, language barrier इतना होता है, you can't say कि क्या सच है क्या नहीं है. तो he took us to some factory. He might have just Okay, so किसी he बंदे was के a साथ sourcer, उसने yeah. सेटिंग कर ली, क्या कर लिया, वो लेके गया एंड पूरी वीडियोस पे बात हुई, सब कुछ दिखाता रहा. एंड व्हेन इट came to delivery, तो धीरे धीरे ही started playing कि अभी स्टॉक में थोड़ा टाइम है, एंड थोड़ी देर बाद he just completely just vanished. vanished. Yeah. And then we tried reaching out to the factory because somehow we took contact of the other people, and they all said that yeah, he used to work here but he left and we don't have any record of your business. And I was like, I've paid the money to you guys and everything, but they all just completely denied to that. yeah, completely denied. They they kept on making excuses about it, but at the end of the day we realized that the money is doomed. Okay. Yeah, but Okay. Now I'll ask you a very straight question. Like, if someone like you has faced vendor की problem वहाँ पे, तो अगर आज मैं as a teenager एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मतलब मैं किसी वेंडर से ग्लोबली सोर्स कर रहा हूँ कोई चीज, तो Yeah. क्या ऐसे पॉइंटर्स हो सकते हैं जो मैं दिमाग में रखूँ इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि वेंडर मेरा बना दे? सो आज की डेट में यार बहुत सारे ट्रस्टेड सोर्सेज मिल जाते हैं आपको. देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस आल्सो नाउ हु हैव सेटल्ड इन चाइना एंड हु आर इनटू दिस बिजनेस. सोशल मीडिया इज फुल ऑफ सच पीपल. सो अगेन आई वुड नॉट से दैट उनको भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बट आई थिंक थिंग्स आर मोर इवॉल्व्ड नाउ. देयर आर स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर एवरीथिंग. तो अगर आपको एक ट्रस्टेड सोर्स मिल जाए हु हेल्प्स यू विद ऑल ऑफ योर प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड even end-to-end services to get your product to India, yes, they'll charge a fee. They'll be slightly more expensive than what you do yourself, but I would say it's worth it. So Here if we you are talking about the agents, Yeah. that are out present in the Yes. Chinese market, and then Yes. they work for you. Yes. You pay them, and yes, you so get there are a your lot work of done. logistic partners here in India also. If you find like a right logistic partner in India, they will help you out and find a good source in China, which will be their trusted source they work with. So I mean, there are a lot of See, I have seen options people available like now. I have seen people from India going to China now, and Yeah. they are sitting there and doing Settled out, settle yes, down, and yes. I know a guy. I don't know if he is okay with me taking his name or not, but he helped me try to find some products. Like there was a guy Yes. named Bharat, and he helped me list Yes, down there's a some lot products, of and like such he is doing. lot of people available in each market now. Major जो hubs हैं China में, there are a lot of agents available. A lot of Indian agents are available, Yeah. and they can help anybody who's starting out. I would say they can trust them. Of course, do your due diligence for that. But if you find a trustable source, you can rely on them, and then they'll help you out with the end-to-end services, and that's about it. So, अब हम ब्रांडिंग के ऊपर आते हैं. तो जैसे आपने हाउस ऑफ वर्क ब्रांड बनाया, तो उसके अंदर आपको स्टार्टिंग से पता था आपने ऑनलाइन सेल करना है, या कोई डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी थे उस चीज के? Yeah, to be honest, as I told you, when I started, the idea was just to become a seller, I would say, and make some money. And कुछ भी एवेन्यूज मिलते थे, यूज्ड टू सेल. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है टू बी ऑनेस्ट. जब स्टार्ट किया था तब Amazon भी नहीं था इंडिया में, एंड देयर वर वेरी लिमिटेड ट्रस्टेड सोर्सेज. खुद की वेबसाइट बनाना तो सोचा ही नहीं था कि अपने ब्रांड की खुद कुछ वेबसाइट बनानी है. द आइडिया वाज टू हाउ टू सेल इट ऑन मार्केट प्लेसेस इनिशियली. मच लेटर इन लाइफ वी बिल्ट अप आवर ओन वेबसाइट ऑल्सो. दैट केम एट अ लेटर स्टेज, बट इनिशियली द आइडिया वाज कि पता नहीं था ना कि खुद की वेबसाइट बनाएंगे, हाउ टू मार्केट इट, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. हाउ टू रन एड्स, वी डिडंट हैव एनी नॉलेज बैक देन. सो द आइडिया वाज जस्ट टू सेल. एंड कमिंग बैक टू दैट स्टोरी, मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो एज आई टोल्ड यू, Amazon नहीं था, एस्पेक्ट्स एवेन्यूज कम थे. वी ऑल्सो started putting up stalls in exhibitions.
and that was a very good learning for us, मतलब to understand customer behavior, क्या customer buy कर रहा है, and then it became like a regular affair for us. हम लोगों ने रेगुलरली एग्जिबिट करना शुरू किया जो, एंड वी डिडंट, एंड वी आल्सो एक्सपीरियंस दैट हमने काफी हाई एंड जगह पे स्टॉल लगाया, वहां पे हमारी सेल्स वर नॉट दैट ग्रेट, बट मिड लेवल प्लेसेस जहाँ पे फुटफॉल अच्छा था, we did great business. There was also a time when a lot of other vendors alongside didn't do that much business, but we as a brand back then we did great numbers. So we started off with exhibitions, and it was a good experience. मतलब सब चीजें खुद करते थे, stall setup करना, there used to be just one helper, पूरा टेबल सेटअप करना, स्टॉल लगाना, कस्टमर्स से बात करना, बार्गेन करना, like it taught me a lot about customer behavior back then. So was it also a fun aspect added to it? Certainly. Yes, I mean it was a lot of fun. See, matlab, you know, again it was a very good learning, and yes, at the same point of time you are doing business, but you know it's a very something जो तुम्हारे को उसी टाइम दिख रहा है, रिजल्ट्स उसी टाइम मिल रहे हैं, like अब तुमने सेल करी, एकदम से मनी आ गया तुम्हारे पास, तो that aspect was also very good and fun, like you know retail काउंटर की तरह तुम चीजें सेल करते हो, बट yeah, it was fun, it was hectic, some exhibitions didn't even go well, मतलब कई जगह losses भी हुए, but again part of business. So is it also part of a capital gain? Certainly कि कहीं ना कहीं इससे capital भी gain होता है ये, I mean see that time the idea was कि stall के पैसे निकल जाए, overheads निकल जाए, and then you know whatever you have invested in, initially we started off, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज्यादा थी हमारे पास, तो हमने को लगा कि ये एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है सेल करने का, बट अगेन यस, एनी अर्निंग वाज अ हेल्प टू बिजनेस. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि Amazon पे दोबारा आते हैं. जैसे आप हाउस ऑफ वर्क ब्रांड में भी उसमें Amazon पे सेल करते हो एंड सब चीजें करते हो, तो उसकी प्रोडक्ट कमीशंस क्या होती हैं? Amazon कितने पैसे ले जाता है और आप कितने का अगर एक प्रोडक्ट उठाते हो, गिव मी सम रेफरेंसेस टू दैट, और कितने का उसको बेचते हो तो कितने पैसे बचते हैं? या तो ये भी ना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. लोगों को लगता है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने 500 रुपए का खरीदा है और अगर आप 1000 रुपए का Amazon पे बेच रहे हो तो आपका 500 रुपए का प्रॉफिट है, बट इन रियलिटी अगर आपने कोई प्रोडक्ट 500 रुपए का खरीदा और आप 1000 रुपए का बेच रहे हो तो आप लॉसेस में बेच रहे हो. मतलब 500 रुपए के वो जो आपका बीच में गैप है उसमें आप पैसे नहीं कमा सकते, कंसिडरिंग एक पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप. व्हेन यू आर लिस्टिंग द प्रोडक्ट, उसके बाद Amazon की कमीशंस इन्वॉल्व होती है एंड Amazon के लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होते हैं. फिर उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट पे एड्स रन कर रहे हो वो कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, आपके एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपका पैकेजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है. अगर आप FBA कर रहे हो, लाइक यू नो फुलफिल्ड बाय Amazon कर रहे हो, तो आपको Amazon की स्टोरेज भी बेयर करनी पड़ती है, Amazon पे स्टॉक भेजने का कॉस्ट भी बेयर करना पड़ता है. तो देयर आर लॉट ऑफ ओवरहेड्स दैट आर इन्वॉल्व, एंड ये सारे स्ट्रक्चर जब आप निकाल पाते हो उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, एंड उसके बाद आपके पास थोड़ा सा मार्जिन बचता है. एंड नाउ डेज विद हाई कॉम्पिटिशन वो जो मार्जिन स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है. तो आई वुड डेफिनेटली, टू एनीवन हु इज लिसनिंग टू अस, आई वुड से दैट स्टडी योर प्रोडक्ट वेल, बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि ये 300-400 का प्रोडक्ट लेके आप अगर 800 रुपए में या 700 रुपए में डबल करके भी बेच रहे हो, इट गिव्स यू वेरी अगेन डिपेंडिंग ऑन द कमीशंस दैट Amazon is charging, what is your selling price, there are a lot of other factors involved too, but I would say that study it thoroughly and then keep the selling price. Okay, तो Amazon पे आपके प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर में भी आए हैं, काफी सारे ऐसे भी रहे कि यू वर एट द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स. तो वो प्रोडक्ट को चूज करने से लेके बेस्ट सेलर तक की कैसे, मतलब वो क्या कोड क्या है उसको क्रैक करने का? सी, कोई कोड नहीं है यार. बेस्ट सेलर्स पे आना, इनिशियली वी थॉट इट्स अ लक, यू नो, बट अगेन एक प्रोडक्ट्स कीप ऑन चेंजिंग, राइट? आपका एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में रहेगा, वो 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 6 महीने भी रह सकता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से फाइंड के वो एक प्रोडक्ट नहीं, आपके 50 प्रोडक्ट्स कैसे बेस्ट सेलर रहे. मतलब वो प्रोडक्ट्स तो चेंज होते रहेंगे, बट हाउ टू बिल्ड दैट सिस्टम
कि आपके प्रोडक्ट्स की सेल रेगुलरली अच्छी रहे, वो क्रैक करना इंपॉर्टेंट है. बेस्ट सेलर तक पहुंचना, it can be by fluke, but to maintain a system where 50 products or 100 products are selling good is a tactic that you need to learn. Okay. So I feel that उसके लिए एक proper system follow होना चाहिए. First of all, from the right product fit to how the customers are responding, every review should be accounted for. Amazon पे reviews बहुत matter करते हैं, तो to have a good review in line to see how the customer is responding to the product, एक customer की journey कैसी है, customer का experience कैसा रहा है in the process of buying that product and receiving that product. So I feel if you have that system in order, you can have many bestsellers. So customer का experience और अच्छा करने के लिए what have you know inculcated in the process, या कुछ ऐसे स्पेशल चीजें हैं जो हमने करी हो कभी कि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, या हमारी हेड टू टो जर्नी ही ऐसी रही कि ऑलरेडी कस्टमर एक अच्छे नहीं यार, सी कस्टमर्स वेरी, प्रोडक्ट्स वेरी, तो हर जरूरी नहीं है एक आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो सेम प्रोडक्ट के साथ, तो मेरा भी अच्छा हो. द आइडिया इज टू, Amazon का बहुत बड़ा आई थिंक रोल रहा है इसमें, टू मेनली कस्टमर्स को चाहिए कि प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो जाए. तो Amazon की एक आई वुड गिव इट ऑफ टू देम दैट एनी प्रोडक्ट यू ऑर्डर फ्रॉम देम, दे एटलीस्ट ट्राई टू गेट यू डिलीवर्ड विद इन 1 to 2 days. तो अगर वो एक प्रोडक्ट अगर टाइमली डिलीवर हो रहा है तो इट्स अगेन अ विन फॉर द ब्रांड एंड फॉर द कस्टमर टू, कि आपको एक टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है. उसके बाद यू कैन प्ले विद द बेसिक पैकेजिंग एंड हाउ टू लाइक यू नो कस्टमर को एक एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए आप पैकेजिंग अच्छी कर सकते हो. उसके अंदर एक ऐसा कुछ कर सकते हो कि कस्टमर्स जब प्रोडक्ट आपका खोले तो उनको एक वाओ फैक्टर मिले. तो अगर वो चीजें अगर आपने क्रैक कर ली तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ विनिंग प्रोडक्ट एंड यू कैन हैव अ विनिंग कस्टमर. अगेन बैक टू ब्रांडिंग अगर हम आते हैं, तो ब्रांडिंग की बात अगर जब हम करते हैं तो आपको ये चीज कैसे और कब रियलाइज हुई कि ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में एक पर्सनलाइज्ड ब्रांड बनाना इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है एक बंदे के लिए, rather than just putting out the product? I would say I learned it the hard way. In my experience, when we started selling, as I told you, the idea was just to make money. कि ये product लाया और बेचा. But soon we realized कि products can be copied very easily. Like, right? If you are selling a watch today, or if you are selling say this Apple Watch strap today, I am selling the same strap. You can see that I am getting good sales, तो आप भी copy कर लोगे. It's very easy. So I would say जब ये same मेरे साथ होना शुरू हुआ, that when we were selling, we were doing great numbers, everything was good, but then when competition got influx, everybody started copying the product. Sellers started getting in price war, दो रुपए के price के लिए. Then we realized that this practice needs to stop, right? It's easier to become a seller. It's very difficult to become a brand. So products can be copied, but brand cannot be copied. Cannot be copied. So that is how I learned that it's better to create your value to create something which other brands can't copy. So that is how House of Work came into picture. Lovely. So अगर आज मैं भी एक ही चीज बेच रहा हूँ, आप भी वही चीज बेच रहे हो, ठीक है, एंड हम दोनों का प्राइस पॉइंट भी सिमिलर है, who is going to win and why is he going to win? कोई ऐसे पॉइंटर्स हैं? See again, इसका कोई there's no code to it, but again if you are giving a good experience to your customer, अगर आपके reviews अच्छे हैं and अगर आप customer के grievances को अच्छे से handle कर रहे हो, I would say understand your customer better, and if your customer experience is better, then people will prefer buying from the trusted brand. So maybe product, as I said, product copy हो जाएगा, आप listing copy कर लोगे, images copy कर लो, images भी somewhat copy कर सकते हो, similar design पे आप आज AI भी कर लेते हैं सब लोग. Brand value, that is where the game is. Game changes. जब आपकी brand value बन जाती है, जब आप एक trusted brand बन जाते हो, then you don't have to get into this. तब आपको लगता है कि as a customer also, I'm sure you must have experienced this. When you're buying something, तो आपके एक mind में आता होगा कि मैं इससे मंगा रहा हूँ. But then if there's a brand जहाँ पे एक अच्छे reviews है, and then there everything is rightly mentioned, so then you automatically build up a trust Go to that. over there. करेक्ट. सो इस बिजनेस के अंदर
पेड मार्केटिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, एंड आज जैसे एड ट्रैफिक लाने के लिए लोग फेसबुक मार्केटप्लेस का यूज करते हैं, फेसबुक एड्स का यूज करते हैं, इंस्टाग्राम एड्स का यूज करते हैं. सो पेड मार्केटिंग, हाउ मच ऑफ अ रोल दैट brings into the conversion rate that we organically get. Yet I know that House of Work is a brand जिस पे आपने बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक रीच पे भी काम करा. So how are those two things, in your play? When we started, I would say back in 2012, things were very different. That time, yes, organic sales was an option because competition was less, and it was easier to reach to customers because the competition was less. But nowadays, I feel that advertisement plays such an important role. It's very difficult for somebody who's starting out, and if they're not running ads or anywhere, even marketplaces, even in meta ads, everywhere, trusted ads are very important, and they play a big role. Okay. So, but again, I would say that ads can only amplify your sales. They cannot generate organic sales. Initially, if you're selling a product, you have to build a brand. You have to have that right product market fit. But definitely, ads will help you amplify your sales. Okay. So ads definitely play a bigger role, Yes, and they play a very big role. To have that winning ad is very important. To have that right creative, maybe. right creative, to right audience जिसको आप pitch कर रहे हो उनके लिए वो ad आना. I feel that advertisements play a very important role. Right? So एक dedicated definitely मतलब marketing team होना एक business के अंदर आज की date में is a must. So I would not say that in today's AI's world that you need a team for that. I mean, if you have great knowledge, everything can be automated. You can automate your marketing team completely on Claude Definitely. nowadays. So Definitely. if you know how to do it, a Claude subscription can be your marketing team. yeah, that's true. You can But- build agents now Yes, on yes. that different But I agents. would say that again, you still need a human mind to run that. So if not a team, I would say even if you have 1 to 2 person who understand how ads work and how today's social media game is played, even 1 or 2 person who can manage all of that for you, I would say that it definitely is an add-on for your business. Okay. So recently you told me a story about a celebrity, using your product. Yeah. So would you want to throw some light on that? I mean, honestly, when we got to know, when you see it, it's a great feeling. When organically any known person or a known face is buying your product. And then, of course, it feels good. But that cannot be something which helps you generate sales in the longer run. Definitely a celebrity using your product, and if you're posting about it and if you're letting people know, it builds a trust. So I would say, yes, it was a great feeling, and it's great for trust building. But you can't sustain your business entirely on that. So we try to leverage that moment. Of course, whatever we could do, but I would not take any celebrity names here. But yes, I would say it was a good feeling. Okay, lovely. I also want to know कि certainly अब ना मार्केट शिफ्ट जा रही है बहुत ज्यादा ई-कॉमर्स से लेके क्विक कॉमर्स पर, तो उसके बारे में थोड़ा क्या मतलब हो सकता है, आप थोड़ा सा बताओ. Honestly, क्विक कॉमर्स की किसी को नहीं पता था कि क्विक कॉमर्स आएगा और ऐसे मार्केट फट जाएगी बिल्कुल. So it opened a lot of new avenues. I would say that Amazon taught people where to buy, and quick commerce is now teaching people when to buy. Okay, so nowadays and customer behavior change ho gaya yaar. Now you must have seen that a lot of e-commerce giants like Myntra, Nykaa, everybody has started with 2-hour delivery, 10 minutes delivery to at least major pin codes now. And पहले ही ये चीजें नहीं सोचते थे हम लोग कि 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा या 1 घंटे में. लाइक यू वांट टू ऑर्डर शर्ट एंड और शूज, इट कैन बी डिलीवर्ड टू योर हाउस विद इन 10 minutes to 2 hours now. That's something which is astonishing to see. But market has been such a paradigm shift कि लोगों के पास बेचने वाले के लिए तो फायदा ही हुआ है.
हाँ मतलब अगेन ऑफ कोर्स डिफरेंट एवेन्यूज ओपन हो गए हैं एंड देन यू नो ब्लिंकिट के आने से जेप्टो के आने से और मार्केट ओपन हुई है देयर आर न्यू चैनल्स दैट हैव ओपन तो ग्रोथ मिली है ऑफ कोर्स एंड इट्स बीन ग्रेट फॉर बिजनेस आई वुड से बट कितना सस्टेन करेगा कितना लॉन्ग रन में करेगा दैट्स येट टू सी अभी आई थिंक ये क्विक कॉमर्स का बूम एटलीस्ट फॉर नाउ इट्स शॉर्ट लिव्ड बट लेट्स सी वेयर इट टेक्स यू बट लगता तो ऐसे ही है कि मतलब विद चेंजिंग ट्रेंड्स दैट क्विक कॉमर्स गोना बी द फ्यूचर सस्टेन भी करेगी ये चीज कहीं ना कहीं आगे जाके। या विल लेट टू सबको लेवरेज चाहिए, let's wait and watch to that सबको वो चीज चाहिए। अच्छा, और ब्लिंकिट और Amazon के ऊपर बेचना सिमिलर है दोनों चीजें? Not really. Amazon is fairly easy. Blinkit, when they started, they had a restriction of fewer categories. अब Amazon पे क्या है, इट्स एन ओपन मार्केट प्लेस। आप एक प्रोडक्ट के 10, 20, 50 सेलर्स भी हो सकते हैं, 100 सेलर्स भी हो सकते हैं, पर Blinkit थोड़ा कॉन्स्ट्रेन करके रखता है। अब Blinkit फिर भी ओपन होता जा रहा है, बहुत सारे सेलर्स। when we got on board on Blinkit, we were amongst first or second brand in my category they got onboarded with, and that time it was really difficult to even get listed on Blinkit. Nowadays they charge you money to be listed and थोड़ा डिफरेंट है। It's not the same way. मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहूंगा और कि जैसे किस टाइप के आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं एंड क्या क्या चीजें हैं आपके हाउस ऑफ वर्क ब्रांड में। जैसे I know most of them, but just for the audience, ki if you give them a light that what kind of products are available on that, then you could name them. Name some of them. First, I would say that visit houseofquark.com or maybe just go on Amazon or Blinkit and search for House of Quirk, and you'll see what we sell. But jokes apart, we as a brand, we're trying to solve everyday problems. My idea is not to कि क्या प्रोडक्ट लेके आना है। my idea is कि क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। so when you think from that perspective ना, you get your winning product. आज की डेट में you need to just observe and see that what जैसे past couple of years we realized that how spaces are getting smaller. So that is how we launched our entire range of portable cabinets, and that's our best selling category right now. So you just need to analyze that what problems people are facing nowadays and how you can solve them, and you have your winning product. And when it comes to House of Quirk, we do a lot of products. When it comes to home storage, we do travel products, we do drinkware, and a lot of daily utility products. परफेक्ट। 2012 से लेके 2026 तक 14 साल हो गए। 14 साल में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जर्नी में कोई अप्स एंड डाउन्स ना आए हो। कभी आपका मन करा है ऐसा कि अब बिल्कुल यार थक गया हूं, अब नहीं करना, और या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जिससे आपको लगा हो कि यार इससे गो थ्रू करना तो बहुत मुश्किल होगा? Not really. Like in the past 14 years of my e-commerce brand building journey, it's never been that I said that कि मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं हो रहा types. अभी I feel there's still a long way to go. But yes, there have been situations where been tough times. I would say COVID definitely was one such instance when nobody anticipated कि सब कुछ बंद हो जाएगा, like operations नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा. So that was one phase where we thought that it was a difficult phase, like for a lot of vendors, a lot of brands and a lot of sellers. But again, I would say there was a silver lining which came out of after COVID, because suddenly Indian market saw a paradigm shift. People started buying more frequently. लोगों का एक behavior pattern, because I think जब लोग घर पे थे तो लोगों ने बहुत extra shopping करी. तो उसके बाद जितना मतलब COVID के टाइम फ्रेम में जितनी हमारी सेल्स ड्रॉप हुई, सब कुछ हुआ, बट वी कवर्ड इट अप. बट येस, इनिशियली ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ कोर्स लीन फेस था, काम नहीं था. इनिशियली तो 1-2 महीने बहुत सही थे कि छुट्टियां हैं, यू एंजॉयिंग दैट टाइम ऑफ. बट देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग अबाउट योर वर्कर्स, you start realizing about the people who are working for you. Initially it seemed like we will not be able to pay them off because there was no business coming, but then we realized that how
like, you know, they are completely dependent on us. So even though the business was shut, and we did our best, whatever we could do to support all the workers, and we gave them full salaries, and we tried whatever best we could do for them. But yes, I think COVID was a difficult phase initially, but the markets really boomed after COVID. So whatever losses, whatever time period where we didn't make sales, it really covered up after COVID. So आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो कि भाई 14 साल हो गए, इतनी दूर आ गए, n नंबर ऑफ सेल्स कर ली, इतनी मतलब उस टाइम पे विजन था भी नहीं, अब जब उस चीज को देखते हो, अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के जब देखते हो तो कैसा महसूस होता है? Definitely proud from where I started, and where, like, you know, when we started, कुछ mind में वो नहीं था that okay, you have to build something. The idea was just to be independent, have that freedom. But alongside, we built up something useful. We built up something which is valuable now, and for which of course I'm very proud. But again, I feel that it's still a long way to go. You see new age brands, new age kids like you who are coming, and then they were doing so great. So I feel that you still need to catch up to everybody. And yes, we have to keep going. So उस टाइम पे विजन नहीं था, तो अब के टाइम पे कुछ ऐसे एंड गोल्स बनाए हुए हैं कि मतलब अब है ये विजन, उस टाइम पे जो नहीं था अब सोच लिया है कि भाई अब तो बहुत ही और भी ऊपर, मतलब अब नाउ द यू नो ओशियन इज आवर्स एंड यू नो वी हैव टू स्विम अ लैप टू द नेक्स्ट कंट्री. Definitely. See, matlab, jab, you know, the visions and goals keep on changing, right, with every age. Initially, it was to buy a good car. After that, it was like, you know, okay, you can maybe buy a bigger house, and then, you know, go on that holiday that you always longed for. When you do all of that, when you achieve all of that, then you feel what's next, right? But now I feel that I have done all of that. अब वो goals achieve हो चुके हैं, अब क्या? Now I feel that I want to have more time for myself. That is my goal, so that I'm able to assign more automated systems that जहाँ पे मेरी involvement कम से कम हो, which I'm aiming for. So nowadays I feel your time is your biggest luxury that you can have. So that is my next goal, to have more time for myself, for my family, and to do these podcasts. Okay, with some leverage, you know, with some what I would say, what I would put it through it like कि कुछ चीजों के साथ हमें कुछ लेवरेजेस भी मिलती हैं, तो उन लेवरेजेस में से एक आपकी लेवरेज ये भी रही है कि you have traveled the world. Is it so? How many countries have you traveled? Let's end it with that. Traveled the Let's world. end it with that, so that you know people have an idea that you know, if I you stick to don't have something. a count of the countries I've been to right now, but I haven't traveled the world. I'm yet to travel so many places. That's why I said that, you know, I need more time for myself, that I can enjoy doing things which I love. But yes, I have traveled to many countries, more than 30 countries maybe, and I don't like, you know, I don't have a number in mind that I have to see at least 50 countries or 80 countries. But yes, whatever time I can have for myself, and I can take it out from work and from life, I would love to travel more. I would love to travel with you as well. So let's end this right here, and I feel that, you know, we added some value to people's lives here, and if not, we will keep trying to, and always keep on adding to things that can bring some value to your life. And in return, what you can do is that you can bring some value to someone else's life, and that is how the chain would work, and keep going. And we'll bring more such episodes for you. We'll bring more such journeys for you, where we together learn, think, and grow rich with all these thoughts.